Bangladesh rising. It's been called the fastest growing economy in the Asia-Pacific region. But can Bangladesh sustain the momentum? Hello, I'm Mike Walter filling in. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी को ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमन है, आप देखिए इसमें रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ मेड इन बांग्लादेश के बारे में। अगर हम 1971 की बात करें तो बांग्लादेश ऐसे हालात में था कि कह सकते हैं कि डाइंग सिचुएशन में था और दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में बांग्लादेश का शुमार होता था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। बांग्लादेश ने अपनी मेड इन बांग्लादेश को लेके जिस तेज़ी के साथ काम किया है, पूरी दुनिया में बांग्लादेश ने अपना नाम बनाया है और बांग्लादेश जो है एक ब्रांड बन गया है। बांग्लादेश को लेके अदर कंट्रीज़ की तरफ से बात की जाती है, डिस्कशन की जाती है और बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि कौन सा पाथ है जो बांग्लादेश ने अपनाया और अब वो इतनी कामयाबी के साथ अपना सफ़र आगे लेके चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अमेरिकन मीडिया की बात करने वाली हूँ। यहाँ पे जी अमेरिकन मीडिया की जानिब से मेड इन बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हैरान है वो कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री जो कि डाइंग सिचुएशन में थी, अब उससे बाहर आके एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि ग्रेजुएट करने वाली है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूँगी। इसमें काफ़ी सारी डिस्कशंस हैं हो रही हैं। बांग्लादेश में होने वाले मसले मसाइल अभी भी जो हैं, ठीक है, उनको लेके भी बात होगी और यहाँ पे मेड इन बांग्लादेश स्पेशली उस पर बात की जाएगी। अभी वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। Bangladesh rising. It's been called the fastest growing economy in the Asia-Pacific region. But can Bangladesh sustain the momentum? Hello, I'm Mike Walter filling in for Anna Naidu, and this is The Heat. Bangladesh is one of the region's most surprising success stories. In a few short decades, the South Asian nation has transformed itself from one of the world's poorest nations to an economic powerhouse. Much of that success can be attributed to the robust manufacturing sector. But the Bangladeshi economic miracle has come at a huge cost to its garment workers. In 2013, a garment factory collapsed in the capital Dhaka, killing more than 1,000 people. Since then, efforts have been made to address workers' rights and safety concerns. Women's rights have also come under the spotlight after a schoolgirl was burned to death for filing a sexual harassment complaint against the school's principal. 16 people were charged with a brutal murder that sent shockwaves across the country. For a look at the opportunities and challenges facing Bangladesh, we're joined by our panel. Dr. Famida Khatun is the Executive Director at the Center for Policy Dialogue in Bangladesh. She joins us from the capital, Dhaka. Tanya Rashid is a special correspondent for the PBS NewsHour and a lecturer at Stony Brook University School of Journalism in New York. With us here in Washington, Sadanan Dume is a resident fellow at the American Enterprise Institute. Also joining us is Dina Siddiqui. She is a clinical associate professor at New York University. I want to welcome all of you to the show. Famida, let me start with you because before I get to the question, though, a little bit of context. I'm old enough to remember the concert for Bangladesh back in 1971. George Harrison put on that concert, and he even did a song, and the first lyrics were, "My friend came to me with sadness in his eyes, told me that he wanted help before his country dies." So this was an effort to awaken Western society to this catastrophe in South Asia. That was 1971. Now let's listen to the UN Secretary General in April of last year. I'm delighted that Bangladesh has fulfilled the criteria for graduation from the world's least developed countries. This is a clear signal that the country is building an inclusive and thriving economy with a commitment to lifting millions of people from poverty and hunger. And I also commend Bangladesh's achievement in women's empowerment and access to education. So, Famida, trace this trajectory. In 1971, it's seen as a country that's dying. Today, it's seen as a country that's thriving. How did it happen? Well, you have to consider that we have passed more than 4 decades. Now,
one of the factors of Bangladesh's progress is that the social progress had preceded economic progress when Bangladesh became independent. And in the 80s and 90s, many organizations, non-government organizations such as Grameen Bank or BRAC, they had invested on women's empowerment, and through microcredit and various social programs, women had involved themselves in many economic activities, and as a result, they had to have investment on their children in terms of education and health care. And that has also moved forward the social transformation. And the second point, I would say that there had been some global opportunities. For example, this multi-fiber arrangement in the 80s, mid-80s, Bangladeshi private sector entrepreneurs took that opportunity, and as you have mentioned in the beginning of the show, that the private sector had taken advantage of these multi-fiber arrangement through which they had exported the ready-made garments. The third factor, I would say that the government policies, though we had different regimes, but the economic policies were more or less the similar kind of policies were pursued by the two major political parties who had been in power for the last several decades. So from the mid-80s or towards the 90s, the country had moved away from its basic principle during the independence, and it had opened up to the market economy. The denationalization happened, but at the same time, as I have mentioned, that a lot of opportunities which had came by, the private sector could take advantage of this. So I would say basically some sort of macro stability had been in favor of the progress. Sadhanan, one of the interesting things, I mean, the International Monetary Fund downgrading the world economy to about 3% growth, and yet when we look at Bangladesh, this fiscal year, more than 8%, it's really a remarkable story, isn't it? It is a remarkable story. I don't think, when you look at growth rates, I think you have to sort of benchmark them against per capita income. Now, Bangladesh is doing very well, and 8.1% is certainly nothing to scoff at. But you have to understand that this is a country whose per capita income is about 2,000. So when we look at growth rates in the West, we tend to say that, well, in the U.S. we'd be really happy if we had 3%. But that's really not how to look at growth rates in a developing country. That said, I have to say that I have to echo the previous speaker and point out that in many ways Bangladesh has been the standout star of South Asia, especially over the last 20 years. If you look at its economic progress, this is a country in 1971 that Henry Kissinger had famously dismissed as a basket case. And now, if you look around the region, you look at Pakistan, you look at Sri Lanka, you look at Nepal, even to a certain extent India, you find that Bangladesh has in many ways done the basics right and is therefore benefiting from that. Dina, I saw you nodding your head. What do you trace this to? आप लोगों ने देखिए अमेरिका की जानिब से बांग्लादेश को किस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है। बांग्लादेश एक स्टैंड आउट स्टार है साउथ एशिया में, और बहुत सारी कंट्रीज़ जिस तरह इम्प्रेस हुई हैं बांग्लादेश से, मजबूर हो गई हैं बांग्लादेश के बारे में बात करने के लिए। जिस तरह अभी ये डिस्कशन चल रही थी, मुख्तलिफ गेस्ट हैं जिनको बुलाया गया था कि वो इसको लेके बात करें, जहाँ पे जी उनसे पूछा जा रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांग्लादेश की जानिब से की गई, और अब जी बांग्लादेश इस सिचुएशन में है और इतना प्रोस्पेरियस होता जा रहा है डे बाय डे। यहाँ पे इन्होंने जीडीपी की भी बात की कि 8% प्लस जीडीपी, और कोई भी कंट्री स्पेशली यहाँ पे कोविड की बात की गई कि उस सिचुएशन में कोई भी कंट्री इतने ज़्यादा जीडीपी नहीं हासिल कर सकी, लेकिन बांग्लादेश ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और इस सिचुएशन में भी अच्छा काम करके दिखाया। इसके बाद जी बताया गया, जो बात हमेशा मैं करती हूँ कि यहाँ पे जी बांग्लादेश की औरतों को जिस तरह एम्पावर किया गया, बांग्लादेश की औरतों को टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ में लेके आया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि वो आके जॉब्स करें, उनके बच्चों को संभाला गया और उनको कहा गया आप काम करें, चिल होके काम करें, उनको सर्व किया गया, उनको कहा गया कि आप लोगों को हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी
लेकिन आप लोगों ने काम करना है। इसके बाद ही जब औरतों की जानिब से काम करना स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट किया। और जब भी एक औरत कमाने लगती है तो वो अपने घर को बेहतर अंदाज में चलाती है। तो जब उन्होंने अपने बच्चों की बेहतर परवरिश की तो आगे जी ये साइकिल जो है ना चलता जाता है। जब बच्चा पढ़ लिख के कामयाब होता है तो वो भी काम करने लग जाता है। तो इस तरह एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ जी सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये ख़ातून जो है इन्होंने भी यही कहा कि औरतों का है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और आज जो मेजॉरिटी है वो औरतों की है जो टेक्सटाइल्स में काम कर रही है। और अब आगे कोई भी ऐसा सेक्टर जहाँ पे औरतों ने काम स्टार्ट कर दिया तो आई एम श्योर कि बांग्लादेश उसमें भी रॉक करने वाला है। ये एक अच्छी चीज़ है। आगे औरतों को मज़ीद मोटिवेट करना चाहिए कि वो और भी ऐसे सेक्टर्स में जाके काम करना स्टार्ट करें ताकि उनका भी वहाँ पे भी जैसे टेक्सटाइल जो बांग्लादेश की हैं एक ब्रांड बन गई हैं उस तरह वो सेक्टर भी हो सकता है। यहाँ पे अमेरिका इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अमेरिकन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है लाजमी बताना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, लाइक का बड़ा सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टेक केयर, हाफिज़।